Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In our today's session, we are going to discuss that how the fold mountains are formed. जो आपकी फोल्ड माउंटेन्स होती है वो कैसे फॉर्म होती है. एक सेशन में हमने कवर किया था कि आपकी फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है. In this particular video, we are going to discuss that how the fold mountains are formed. Okay, so first of all, we have to understand कि आपके fold mountains होते क्या. Okay, so what are the fold mountains, students? Fold mountains आपकी वो mountains होती है. Fold mountains are those mountains which are formed from the folding of the earth crust. जब आपकी अर्थ क्रस्ट बच्चे फोल्ड होती है, फोल्ड कैसे होती है? दिस इज द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कब फोल्ड होती है? जब आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हो. व्हेन द प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर. व्हेन द प्लेट्स मतलब हमारे घर वाली प्लेट्स थी, दैट इज द लिथोस्फेरिक प्लेट. ओके, अर्थ की crustal plates moving towards one another. That is, it leads to the formation of the fold mountain. Moving to the second, that how the fold mountains are formed. This is the basic one. Okay, ये हमें पढ़ना है हमारे इस particular session में, that how the fold mountains are formed. Now, how they are formed? Let's come to one topic, that is, fold mountains are formed when the two plates are moving towards each other. When they are moving towards each other means ऐसे बच्चे. When they are moving towards one another, then what it happened? This leads where the two continental plates move towards each other. या तो आपकी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करें, या फिर आपकी एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट मूव करे. कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक और कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट. If I look you and if I show you this particular diagram, so what happened? One plate is the continental plate and the other plate is the oceanic plate. ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपके टकरा रहे हैं. तो आपकी ओशनिक प्लेट अंदर जा रही है और कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ आ रही है. Leads to the formation of the fold mountain. The best example of this one is बच्चे your Andes. Okay, Andes are one of the best example of your fold mountains where the continent and the oceanic plates are converging with one another. Okay, moving to the second one, that is your bache. Again, here we have the continental crust and the continental crust. Both the plates are continental and continental. Now what is happening here? Continental and continental दोनों टकराई. Okay, so what happened? Again, it leads to the formation of the fold mountain. The best example is your Himalayas. Okay, the best example are your Himalayas, which are formed by the bache Indian plate एंड द यूरेशियन प्लेट. ओके, जब आपकी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई और दोनों की दोनों आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट. अगेन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर फोल्ड माउंटेन. सो व्हाट वी हैव? टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, द एग्जांपल ऑफ हिमालयास. ओके, वन कॉन्टिनेंटल एंड वन ओशनिक प्लेट्स, द एग्जांपल आर योर एंडीज माउंटेन. ओके, चलिए. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज नाउ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द टू प्लेट्स फोर्सेस सेडिमेंट्री रॉक अपवर्ड इनटू अ सीरीज ऑफ फोल्ड. अब इससे क्या होता है? दोनों जब टकराती हैं तो आपके क्या होता है? बीच वाला पोर्शन बच्चे उठ जाता है. लुक एट दिस, उठ जाता है. और इससे क्या होता है? आपका सीरीज ऑफ फोल्ड आर फॉर्म्ड. ओके, एंड दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन. ये आपको बस बताया हुआ है यहाँ पे. नाउ द सेकंड व्हाट इंपॉर्टेंट वी हैव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. ओके, दो तरह की आपकी फोल्ड माउंटेन होती है. वन इज यंग एंड द अदर वन इज ओल्ड. यंग कौन सी होती है? जिनकी एज आपकी 10 से 25 मिलियन ईयर्स की होती है. 10 to 25. The example are your Rockies and the Himalayas. So Himalayas and Rockies both are the young fold mountains. Okay, the Himalayas and the Rockies, both of them are the young fold mountains. Whereas the second what we have is the old fold mountains. बच्चे आपके पुराने old fold mountains वो कौन से होते हैं? जिनकी उम्र आपकी 200 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा होती है. Okay, more than 200 million years back. That is, the examples are your Ural mountains है जो बच्चे Appalachian mountains of USA. Okay, Appalachian mountains and the Ural mountains of Europe, Appalachian mountains of your USA, both of them are the examples of your old fold mountains which are around 200 million years back. Okay, they are formed this years back. Okay, I hope that it's clear to everyone, students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the same kind of sessions. Thank you.